हम लोग देखेंगे जनरल नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। पहले देखें इसका डेफिनेशन क्या है और इसके बेस्ड कुछ एग्जांपल देखें। तो डेफिनेशन क्या कहता है कि जनरल नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लेट z बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ n वेरिएबल्स। z क्या है? n वेरिएबल्स का रियल वैल्यूड फंक्शन है एंड डिफाइंड बाय z इज इक्वल टू f x1 x2 so on x। ये a हो गया। And let b1 b2 so on bm be a set of constants such that g1 x1 x2 so on xn less than or equal to, greater than or equal to, or equal to b1। फिर g2 x1 x2 so on xn less than or equal to, greater than or equal to, or equal to b2 and so on gm x1 x2 so on xn less than or equal to, greater than or equal to, or equal to bm। ये जो सेट ऑफ इक्वेशन है n इक्वेशन, इसको हमने b से डिनोट किया, where gi's are real valued functions of n variables x1 to so on xn। Finally, let xj be greater than or equal to 0, j is equal to 1 to so on n। तो हमने c से डिनोट किया। मेरे टोटल वेरिएबल्स हैं n, x1 x2 so on xn, और नंबर ऑफ कांस्टेंट्स हैं हमारे पास m, and this is the objective function। If either f x1 x2 so on xn means this objective function, और some gi x1 x2 so on xn I is equal to 1 to so on m, इसमें से कुछ gi और बोथ या दोनों माने f भी हो और में से some gi भी हो, are non-linear अगर होंगे, then the problem of determining the n type x1 x2 so on xn which makes z a maximum or minimum and satisfies b and c, this b and c is called a general non-linear programming problem। यानी कि f नॉन लीनियर हो या इन g में से कोई नॉन लीनियर हो या दोनों नॉन लीनियर हो, उस केस में हम बोलेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है ये क्या है, जनरल नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है जिसमें z को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है अंडर द कंडीशंस b and c। In matrix notations, the GNLPP may be written as determine x transpose in Rn so as to maximize or minimize the objective function z is equal to fx subject to the constants gis less than equal to, greater than equal to, or equal to bi x greater than equal to 0 and I is varying from 1 to m, means there are m constants। where either fx or some gis or both are non-linear in x। Sometimes it is convenient to write the constants gis less than or equal to, or greater than equal to, or equal to bi as hi less than equal to, greater than equal to, or equal to 0, और for hix is equal to gix minus bi। अगर hix को हम ले लें gix minus bi, then gix के लिए ये inequality and equality। There is one simplex like solution procedure for the solution of the general non-linear programming problem। However, numerous solution methods have been developed in the appearance of the fundamental theoretical paper by Kuhn-Tucker। कुन-टकर कंडीशन भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। by Kuhn and Tucker in 1915। In spite of the substantial advancement in the solution methods in recent years, an efficient solution procedure for the GNLPP is yet to be developed। Therefore, a few primary types of available solution techniques will be discussed in this and the next chapter। देखो, प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टेंट मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या है ये? In this section, we shall deal with the optimization problem of continuous functions when the constants are imposed on the variable। If the non-linear programming problem is composed of some differentiable objective function, objective function कैसा होना चाहिए? Differentiable होना चाहिए। An equality side constant, constants कैसे हो? Equality side हो। The optimization may be achieved by the use of Lagrange multiplier as illustrated below। नीचे हम लोग Lagrange multipliers का यूज करेंगे, तो उसके बारे में देखें। पहला है कांस्टेंट फॉर ऑल इक्वालिटी कांस्टेंट व्हेन ऑल द कांस्टेंट्स आर इक्वल, तब केस में, और इसका नेक्स्ट केस होगा व्हेन ऑल द कांस्टेंट्स आर नॉट इक्वल, मतलब इनइक्वालिटी टाइप। नेसेसरी कंडीशंस फॉर मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। देखो, टू
illustrate the use of Lagrange multipliers, we begin with the simplest constant optimization problem involving a function of two variables subject to one constant in the form of an equation. Let us consider the problem of maximizing or minimizing z equal to f(x1, x2) function has two variables का subject to the constant g x1 x2 is equal to c. Constant एक है और वो भी equality constant है. And x1 x2 greater than equal to 0, this c is a constant. We assume that f x1 x2 and g x1 x2 are differentiable with respect to x1 and x2. Let us introduce differentiable function h x1 x2. हम लोग introduce करेंगे differentiable with respect to x1 and x2 and defined by h x1 x2 equal to g x1 x2 minus c. G x1 x2 minus c ले लें h x1 x2. Then the problem can be restated as maximize z equal to f(x1 x2) subject to the constants h x1 x2 equal to 0 and x1 x2 greater than equal to 0. To find the necessary conditions for a maximum or minimum value of z, a new function is formed by introducing a Lagrange multiplier lambda. Lagrange multiplier lambda का यूज करके हम लोग नया फंक्शन बनाएंगे L x1 x2 lambda और इसको बोलेंगे Lagrangian function with Lagrange multiplier lambda. And this is written as f x1 x2 minus lambda times h x1 x2. यानी ये जो f x1 x2 है इसमें से h x1 x2 को lambda से मल्टीप्लाई करके हमें माइनस कर देते because this is the constant. The number lambda is an unknown constant and the function L x1 x2 lambda is called the Lagrangian function with Lagrange multiplier lambda. The necessary conditions for a maximum or a minimum, or you can say stationary value of f x1 x2 subject to h x1 x2 equal to 0 are thus given by del x by del x1 is equal to 0, del x by del x2 is equal to 0, and del x del L by del lambda is equal to 0. Partial differentiation with respect to x1, x2 and lambda equal to 0 हो जाएंगे. So these are the necessary conditions. Now these partial derivatives are given by del x by del x1, del f by del x1 lambda times del x by del x1, del L by del x2 means del f by del x2 minus lambda times del h by del x2, and del L by del lambda is your minus. Next is your where L, F and H stand for the functions L x1 x2 lambda, F x1 x2 and H x1 x2 respectively. और simply by L1 हो जाएगा f1 minus lambda x1, L2 means L2 minus f2 minus lambda x2, and L lambda is minus. L1 means differentiation of L with respect to x1 and L2 means differentiation of L with respect to x2, and both are partial differentiation. The necessary conditions for maximum or minimum of f x1 x2 are given by L1 0 होना चाहिए, L2 0 हो जाए और L lambda 0 हो जाए. It means f1 should be lambda times h1, f2 should be lambda times h2, and minus h x1 x2 is equal to 0. These necessary conditions become sufficient conditions for a maximum or minimum if the objective function is concave. Maximum होगा concave अगर है तो maximum और convex है तो minimum. And the side constants are in the form of equalities. जो constants हैं उनको equality होना चाहिए, inequality के लिए नहीं है. Example problem हम लोग देख लेते हैं. Input allocation problem. देखो, a manufacturing concern produces a product consisting of two raw materials A1 and A2. दो raw material बन रहा है A1 और A2. The production function is estimated as, जो production का function है that is f x1 x2 इस तरह से दिया हुआ है 3.6 x1 minus 0.4 x1 square plus 1.6 x2 minus 0.2 x2 square, where z represents the quantity in tons of the product produced and x1 and x2 designate the input amounts of raw materials A1 and A2. ठीक, x1 है A1 का amount और x2 है A2 का. The company has rupees 50,000 to spend on these two raw materials. कंपनी का 50,000 रुपए खर्च करने के लिए raw material A1 and A2 पे. The unit price of A1 is rupees 10,000 and of A2 is rupees 5,000. ठीक, determine how much input amounts of A1 and A2 be decided so as to maximize the production output. देखिए solution. Since the company must operate within the available funds, जो funds उनके पास से 50,000 रुपए का उसी में से उन्हें काम करना है.
द बजटरी कांस्टेंट इज 10,000 x1 मींस a1 का कितना अमाउंट है, कितना अमाउंट हम बना रहे हैं, प्लस 5,000 x2 कितना बना रहे हैं और इस पे खर्च कितना आ रहा है। इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 50,000, क्योंकि 50,000 ही रुपीज इसके पास है और 5,000 से डिवाइड कर देंगे, सो इट विल बी 2x1 plus x2 लेस देन और इक्वल टू 10। ये हमारे पास हो गया कांस्टेंट, बट इट इज इनइक्वालिटी कांस्टेंट। We reduce this inequality constant to an equality one by imposing an additional assumption that the company has to spend every available single paisa on these raw materials. यानी कंपनी के पास जो भी पैसा है 50,000 रुपए वो इस A1 और A2 को बनाने में खर्च कर देगी। उस केस में क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू की जगह हो जाएगा इक्वल टू। देन द कांस्टेंट विल बी 2x1 plus x2 is equal to 10 यहाँ पर। Also, obviously, x1 should be greater than or equal to 0 क्योंकि number of units है, and x2 should also be greater than or equal to 0 क्योंकि ये भी number of units है। Then the cost the problem of the company can thus be written as the following NLPP. देखो क्या प्रॉब्लम हुआ, Maxima is z is equal to f x1 x2 means it is 3.6 x1 minus 0.4 x1 square plus 1.6 x2 minus 0.2 x2 square subject to the constants 2x1 plus x2 is equal to 10। अब यहाँ इक्वालिटी हो गया and x1 x2 greater than or equal to 0 और maximize z is equal to f x1 x2 subject to the constant h x1 x2 is equal to 0, x1 x2 greater than or equal to 0, where h x1 x2 is what, 2x1 plus x2 minus 10. Now see f x1 x2 and h x1 x2 are both differentiable with respect to x1 x2। देखो ये this is your f differentiable x1 x2 के respect में and this is your h, this is also differentiable with respect to x1 and x2। Also, we observe that the objective function z is equal to f x1 x2 is a concave function। ये जो फंक्शन है ये concave फंक्शन है, तो चेक करना पड़ेगा तुम्हें। And the said constant is an equality, constant हमारा equality है, ये भी हो गया। Therefore, the necessary and sufficient conditions for a maximum are f1 should be lambda h1 जैसे पीछे हम लोग देखे थे, f2 should be lambda h2 and minus h x1 x2 is equal to 0। तो f1 पहले जब आप निकालिएगा तो इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x1, तो इट विल बी 3.6 minus 0.8 x1 and this is equal to lambda into h1। h1 में h को विद रिस्पेक्ट टू x1 करेंगे तो 2 मिल जाएगा, तो इट इज 2 lambda। सिमिलरली f2 विद रिस्पेक्ट टू x2 डिफरेंशिएट करेंगे 1.6 minus 0.4 x2, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू lambda h2, ये h को विद रिस्पेक्ट टू x2 करेंगे तो 1 मिलेगा, सो इट इज इक्वल lambda into 1 and this h minus h x1 x2 is equal to 0 means 2x1 plus x2 is equal to 10। तो ये हमारे पास तीन इक्वेशंस हो गए। The first two of these yield, first two को जब सॉल्व करेंगे हमको मिलेगा lambda is equal to 1.8 minus 0.4 x1 and this is 1.6 minus 0.4 x1, ये मिला। and so the elimination of lambda gives 0.4 x1 minus 0.4 x2 minus 0.2 is equal to 0। Now x2 is equal to 10 minus 2 x1। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। The last equation gives 0.4 x1 minus 0.4 into 10 minus x1 minus 0.2 is equal to 0। यहाँ पर आएगी value of x2, so it is 0.4 x1 and minus plus 0.8 x1 is 1.2 x1 minus 0.4 minus 0.2 means minus 4.2, this is equal to 0 और x1 will be 4.2 by 1.2, so it is 3.5। अब x1 अगर 3.5 है तो x2 यहाँ से निकल जाएगा 10 minus 2 into x1, so 10 minus 2 into 3.5 means 10 minus 7 which is equal to 3। So x1 is 3.5 and x2 is 3 and the maximum value of the objective function is z is equal to f x1 x2 है तो 3.53 और जो f का फंक्शन है उसमें x1 की वैल्यू रख देना है 3.5 और x2 की वैल्यू रख देना है 3 और उसको इवैल्यूएट कर लेना है, so it will come out to be 10.7 टन, यानी कि z की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 10.7। Thus, in order to have a maximum production of 10.7 tons, the company must input 3.5 units of raw material A and 3 units of raw material B। So this is your one example. There is another example. देखने जल्दी से इसको भी। Obtain the necessary and sufficient conditions for the optimum solution of the NLPP। Minimize
z equal to f(x1) x2, this is 3 into power 2 x1 plus 1 plus 2 into power 2 x2 plus 5, ये अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। Subject to the constant x1 plus x2 is equal to 7 and x1 x2 greater than equal to 0. देखो ये इक्वालिटी कांस्टेंट। Solution: let us introduce a new differentiable Lagrangian function L x1 x2 lambda defined by L x1 x2 lambda is equal to f x1 x2 minus lambda times this one, this constant x1 plus x2 minus 7. So it is 3 e to the power 2 x1 plus 1 plus 2 e to the power 2 x2 plus 5 minus lambda x1 plus x2 minus 7. Here lambda is a Lagrangian multiplier. Now, since the objective function z is equal to f(x1 x2) is convex, see this objective function is convex and the side constant and equality 1. The side constant हमारा equality है. The necessary and sufficient conditions for the minimum. Convex है तो minimum of f(x1 x2) are given by del L by del x1 equal to 0, del L by del x2 equal to 0, and del L by del lambda is equal to 0. L को with respect to x1 डिफरेंशिएट करिएगा तो आपको मिलेगा 6 into e to the power 2 x1 plus 1 minus lambda equal to 0. यहाँ से लैम्डा मिल गया 6 e to the power 2 x1 plus 1. L को विद रिस्पेक्ट टू x2 करेंगे तो 2 into e to the power x2 plus 5 minus लैम्डा इक्वल टू 0. यहाँ से लैम्डा मिला 2 e to the power x2 plus 5 और विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा करेंगे तो minus x2 plus x2 minus 7 equal to 0 means x1 plus x2 is equal to 7. अब इन फर्स्ट टू से हमें मिलेगा 6 e to the power 2 x1 plus 6 equal to 2 e to the power 2 x2 plus 5. तो इट इज 2 into e to the power x2 की वैल्यू यहाँ से रख देंगे 7 minus x1 plus 5. तो ये हो गया 12 minus x1. तो this is your 3 log 3. अब log लेंगे दोनों तरफ से log 3 plus 2x1 plus 1 is equal to 7 minus x1 plus 5 और यहाँ से x1 मिल जाएगा सॉल्व करेंगे तो 1 by 3 into 11 minus log 3 and x2 will come out to be 7 minus 1 by 3 11 minus log 3 using this x1 plus x2 is equal to 7. तो ये हमारा ये सॉल्यूशन हो गया x1 x2 का because that is your convex, so we will get the minimum value. तो ये भी आपका प्रॉब्लम हो गया सॉल्व. इसके बाद हम लोग का कुछ जनरल केस है और तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. और अगर अभी तुम लोग को नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत लग रही है तो मुझे पूछो ये साहब, अदरवाइज इसको नोट